दारूनी धार नाख दे दी अन भोग लगाड़ नाख्यो। मनखू समझे खाली हेतरी से परंपरा अन संस्कृति, पर आदिवासी संस्कृति ने गहराईथी समजवानुं घणुं बधुं जरूरी छे। आज भी झाबा अलीराजपुर घણા ખરા ગામોમાં આપું દેખી તે બાબી જાતર કરે છે। ये बाबी जातर केर करे जेर बाबो पाणी पड़ी जाए धान ने उगी जाए भाजियो से त्यो भाजियो खावानो मतलब खाए एवो थाई जाय तेर तेनी बात थी बाबो पाणी पड़े तेनी बात थी त्या दूध दही खावानो बंद कर नाखे। तेनी बात थी यो भाजियो ने उगे ती भी खावानो बंद कर नाखे अने जो हागड़ा से त्योना पाड़ा लावવાનો भी बंद कर नाखे। यहाँ एम करीने बंद करे कि जो बाबो पाणी पड़े से सावन माता से अने खत्री से अने पूरी प्रकृति से इन धन्यवाद करवा हारू बाबी जातर करे। શું કરવા કેમ कि एक संयम और ये परंपरा कि सप्ताह पहला हम जो ये भाजियो कुने आलियो अने यो अनाज कुने आलियो तेन पहला धन्यवाद करना कि खत्रीजों धन्यवाद करना कि जल जंगल जमीन ने पूरी प्रकृति ने धन्यवाद करना कि एम करीने बाबी जातर करे से। आखी रात गायणुं करे अन हवेरा उठीने जो देवी स्थान से ताहरका जाए ताहरका भी गायन करे अन ता फिर दारूनी धार नाखीने भोग लगाड़े फिर धन्यवाद अर्पण करे। ताहरका पहला भाजी ने भी चढ़ावे तेनी बाद फिर स्टार्ट करे यो ते पूरू बाबी जातर हूँ से तमु गामना लोगों थी भी सांभळो अन समझो। मेसू परमार आज आपण यो कार्यक्रम करिए। आज આપણે 12 મહિનામાં જાતર કરીએ નવત્રી જાતર આને હારું કરે છે એ મતલબ આ પાણી પડી જાય તેને બાદમાં કઈ લીલું સારું ઉગી જાતી ને फिर ભાજી ઉગી જાતી કઈનો ગામનો તળવી પટેલ કઈનો નહીં ખાય પેલકી માતાજી ને फिर તેનું દૂધ નીકળે માતાજી ગૌ માતા દૂધ સારું છે ને તેનું પાણી આવે તો તેનું દૂધ બને તો તેના દૂધને ખાવાનું નહીં સાય તો માતાજી પર ખીર બનાવીને સબને ખવાડીને પૂજ પાઠ કરીને તેને બાદમાં ખાવાનું ચાલુ કરે। आखी रात कार्यक्रम देवी देहरानी वार्ता पुराणी थी ने जुगनी ती वार्ता काढवी पड़े। पहली तो निकले बाबा ईश्वरनी, फिर बाबा गणेश ने निकालवी पड़े, फिर माता हारदा ने निकले छे तेना बाद में ही पूरी थाया बाद में फिर माता जामा निकालवी पड़े। माता जामा ने निकली पूरी थाई गई तेने बाद खेड़ा पर आवे ने फिर माता सावन गाने तो पड़े। हमारे गाम में अपने जे डहा डहा करता त्या हूँ रीति रिवाज छोरा हूँ करी जा तो अमो वरसाद ने लीधे हूँ करिए पानी लीधे अमू नहीं हो तो बारतू भी करवू पड़े बेगरू कई भी करवू पड़े। तो आज रागे रागे पानी भी पड़ी गयो नवू धान भी उगी गयो नवा पुवाड़िया भी उगी गया झाड़ भी खोलाई गयो बधु थई गયું છે। तो अमू आज ये नांदरों ने जातर कहवाय ये नांदरों ने तो आज अमू नी ते दूध नी दही नहीं कहीं नहीं हवेर था अमू वटाळ करीने लीला पालर खाऊं और नवा दूध नु माथू धोवू। आज अमू माथा धोया तो एवी रीते अमू तो माता ये मेघराजा उतार्यो तो आज माता ने कई नो के माता मोटी नी खुटिये लावीने माता ने बेहाड़ी और माता नी पूजा हम करी जा और गामना करसाण भाई बेटा बदा फाळो आलीने पण माता नु काम हम कर्या वगर अमारो छूटको नहीं भले खादे करो भूखे करो केवा भी रीतमा करवानो। गाम नो बड़वो नहीं मळे बहार गाम तो अमन गाड़ी घोड़ो करीने लावो पड़े अमन तो अमन बात सबद आले वरसाद नो पानी नो बधु एलाण बताड़े कोण बताड़े बड़वो इना मन थी नहीं बताड़े वो माता बताड़े वो माता का इना पंदर में इतरो पानी बीजा पख में इतरो पानी बीजा पख में इतरो पानी वो माता बताड़े हमने तमे आपी हमनी से बधा भाई मळी जा। तो एवी रीते आपणो गाम खुटिया भी छे आपणो घोड़ाजो कुंवर छे ए वाळो बाबा घोड़ाजो छे यो भी बताड़े दुख जामरू सेठी राखे वीरी दुश्मन ने सेठी राखे कोई भी हरी बीमारी सेठी राखे आपन गांव वाला चुक्ति राखे एतरू जाणो हमारो भाई। इना बारामा मारा बाप दादा धनुता करता पहला सलावणी जातर ये जातर करी आज ये जातर केम करी लीलो पानी पड़ी जाए पायलू खोले गयू
તો ઘરમાં ઘાલવાનું, યુની ઘાલવાનું ઘરમાં. અને પાણી પડી ગયું તો લીપાય નહીં, ના વેડ પુરાય, ના કોઈને ભીંડો ભાજી ખાય, કઈનો ડોડી નહીં ખાય. તો એ પૈડાની જાતર છે. ફેર ડોડીની બીજી આવે, એ પાલાની આવી છે. પાલો કુળાયો તો પાલો હમણે ખાઈ શકે, ઝરકલીની ભાજી ખાઈ શકે. આગળનું પૈડું ઘરમાં ખાલી ખાલી પામણા આવી ગયા, પેલખા તે પૈડામાં ખાતેલા ને હાવ ભાજી આવી ગયો, પણ હાવ પૈડામાં ખાતેલા ને ગાડી. એવી રીતે આજ પૂરા દેહરાની એ જાતર કરી માતા સાવનની. તે ઇનમાં હું સડે અને હું લાગે, હા ભોગ લાગે. त्यो भोग हमने आ लियो देखो, ये हांडली सड़ावी पेली बाबा देवनी, ये मातानी, आम आपला सड़े आने લીલેતરી વાડી થઈ ગઈ. બધાના કરબડા ચાલી હોળો ચાલી રહ્યા, પાણી પડી ગયો. તે યુ કામ હર સાલ થાય એવી રીતે. અને સલાવણી હું કોરામ કરી દી, ડોકરા કરતે ભાજી હારું ये કરી ગયો. હા ભાજી ખાઈ શકે, અને નવાઈ હારું ફેર બીજી કરે. નવે ફેર બીજી થાય. હમણે ઝરકલીની ભાજી ખાઈ શકે, ફોડેન બી ખાઈ શકે. પાછી તે જાતર બીજી થાય, દોડીની બીજી થાય. નામ તમારું? બહાદુર વસુંજા, ફૂલોડીનું તડવી. આજ તમારે ઘેર શું કાર્યક્રમ રાખ્યો? ઘેર અમારે ત્યાં મતલબ રાખ્યું તો ત્યાં જેને તડવીને ઘેર પાઠ પૂરાય, ત્યાં આખી રાત ગયણા કરે દેવી દેવતાના. પેલખો મહાદેવની મતલબ પૂરી આરતી ઉતારે મહાદેવના બારામાં, ફેર ગણેશજીના બારામાં, ફેર હારदा माता, फिर जहमा माता. आम फिर माता ही है बाद में सावन माता, कि सावन माता ही हर गांव काढ़ कुटिया जोड़े रही. हर गांव में सावन माता ही मतलब खेड़े खेड़े सावन माता है हर खेड़ा में. और इना सावन माता ये पानी लावी गाड़ी काल पड़ी गई तो तेना बारा में जातर भी करें. ते जातर करे तो ये लीलतरी पांजी बदले, झाड़ बीड़ कोड़ाई जाए तेने हागड़ा पैड़ा पूजी ने फेर अमु मतलब घेर में गालो हागड़ा नो ये भी हमें डोडी जातर बीज थाय. फिर तीन बाद आखा तीज में फिर भी पूजन करो हम. अरे जो पानी नहीं आवे तो अमन फिर बार तो कर खाव पड़े के हगड़ा गाँव वाला बेड़ा थे मन त्यो भी कार्यक्रम करવો પડે. વિડીયો તમે દેખ્યો તે હા તમે થોડુંક એ વાત યાદ રાખ લેજો કે પરંપરાઓ અને સંસ્કૃતિ જો આદિવાસી સંસ્કૃતિની પરંપરાઓ છે એને ખાલી તમે દારૂની ધાર નાખવા અને ભોગ લગાડવા તક સીમિત મત રાખજો. આદિવાસી સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ જો છે એકતાનો, સંયમનો, સામૂહિકતાનો, જલ જંગલ જમીનનો, ખતરીજનો અને પૂરી પ્રકૃતિને ધન્યવાદ અર્પણ કરવાનો, પૂરી પ્રકૃતિને વસાડે રાખવાનો મોટો એક પ્રતીક છે, મોટો ઉદાહરણ છે. यो वीडियो તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટ બોક્સમાં બતાડી દેજો. ચેનલ પર અગર તમે નવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મારું નામ અજય ભુરિયાન, તમે દેખતેલા સમગ્ર દર્શન.